This is Imran Kazmi, and we are going to start lecture 16 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have started functions. We have discussed some of the basics of functions, like introduction of functions, why we use functions or advantages of using functions, how to declare the function, how to define the function, and how we call the functions. And we have classified functions into two categories: user defined functions and standard library functions. We have started working on user defined functions. In this lecture, we will discuss some details of functions, like function calls with arguments and with some calculations. We will discuss different forms of function calls and the working of functions, how simply the call works. This was the program in the last lecture. Let's review it. We have two functions, Pakistan and England, both having void on left side and right hand side, mean. Pakistan having no return type, that is why void is placed over there, and with no argument we have void over here. Similarly, England also have no return type, that is why we place void over here, and with no argument we have void over here. So both of these functions are not returning any value or not having any return type, and both of these functions have no arguments. So that is why we place void over here. We call, first of all, control enter in main, clear screen, see out I am in main, function main, this line would be executed. Then Pakistan would be called, control would transfer to the Pakistan function, where it will perform a single statement see out, I am in function main, and after the completion of this function, control would come back to main, the calling function, and again Pakistan is called, again control transfer to the Pakistan, and again this statement would be executed, and again after the completion of function, control would come back to the calling function, that is main, and then the next statement I am back in main, and then get ch and close, the main ends. So execution always start from main and ends with main. So we have called Pakistan two times, but we never called England. It means the function property has been discussed over here, that any function can be called for any number of time, and there is no constraint on calling of function, and similarly there is no constraint that if the function has been defined it must be called. It is the user requirement or the programmer requirement whether after the definition the programmer call the function or not. If the function is required or the task is required, the function would be called, and if the task is not required, function would not be called. सो एक फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा भी कॉल हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि एक फंक्शन को कभी कॉल ना किया जाए. जैसे पाकिस्तान को दो दफ़ा कॉल किया गया और इंग्लैंड को एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया गया. तो जिस फंक्शन की आपको ज़रूरत है आप उसे जितनी दफ़ा मर्ज़ी कॉल करें, और जिसकी ज़रूरत नहीं है बेशक आप उसे कॉल ना करें, इवन दो कि वो डिक्लेयर भी है और डिफाइंड भी है, आप उसे कॉल नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस पर प्रोसेस नहीं होगा. सो इंग्लैंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये अपना टास्क परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसे कॉल नहीं किया गया. लेट्स गो इन द नेक्स्ट एग्जांपल.
Yes, same is the case over here. Same program with little change. Same functions. Declaration is same. But the calling sequence is different. First of all, clear screen, then I am in function main. Then the first call is Pakistan and the second call is England. So how simply it would work? First of all, when the Pakistan is called, control is transferred to the Pakistan function where it would perform its task, and that is I am in function Pakistan, and after completion it would return back to the calling function and perform the next statement, and the next statement is again another function call, and the function is England. So when England function is called, control would transfer to the England function where it would perform its task, and that is I am in function England. And when this England function would get complete, control again would come back to the calling function and perform the next statement. I am in back in main. So the output of this function would be, first of all I am in function main, then the statement I am in Pakistan, after that I am in function England, and then the result would be I am back in main. So इसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले आई एम इन फंक्शन मेन डिस्प्ले होगा, फिर पाकिस्तान का फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल पाकिस्तान के फंक्शन में चला जाएगा, वहाँ टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद वापस वहीं पे आएगा जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया था. यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन आपका मेन है और कॉल्ड फंक्शन जो है वो पाकिस्तान है. यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे एक और फंक्शन कॉल है, तो कंट्रोल दोबारा उस फंक्शन के मुताबिक, इंग्लैंड का फंक्शन कॉल हो रहा है तो कंट्रोल इंग्लैंड के फंक्शन में चला जाएगा और वहाँ पे मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आ जाएगा मेन में, और उसके बाद द नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम बैक इन मेन ये लास्ट में डिस्प्ले होगी. तो ये हमने लास्ट टाइम 2 प्रोग्राम्स किए थे, थोड़ा मैंने कहा कि आपको रिव्यू करवा दूं. लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन. एनी फंक्शन कैन कॉल एनी अदर फंक्शन इन द प्रोग्राम. कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, इस पे कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि सिर्फ मेन ही दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकता है. कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. इवन इसमें ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि एक फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है. अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ. और जब फंक्शन कोई अपने आप को कॉल करता है, इस प्रोसेस को हम रिकरियन बोलते हैं. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड that any function can call any other function in the program. So never think like that only main can call the function. Any other function can call any other function. Even a function can call itself. And when a function call itself, this procedure or process is called recursion. इसको भी हम डिस्कस करेंगे recursion को भी. So let's start. देखते हैं कि जी इसको किस तरह से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है. एक एग्जांपल है जी, 3 फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं, पाकिस्तान, चाइना एंड इंग्लैंड. पाकिस्तान के भी कोई रिटर्न नहीं हो रही वैल्यू, नो रिटर्न टाइप, सो दैट इज व्हाई वी प्लेस void and no argument. So over here we have void. Same is the case with China, no return type, no value is being returned, so void over here, no argument, so void over here. Similarly England, no return type, void over here, no argument, void over here. So all these 3 functions, Pakistan, China and England, have no return value, so that is why I have no return type. So only void would be placed over here and sending or receiving no values as argument, so that is why we have void over here. So let's start from the function main. First of all, clear screen.
the first statement I am in main, then Pakistan would be called. This is a Pakistan call. Control would transfer into the Pakistan. The first statement in the Pakistan function is I am in Pakistan. Then the second statement is a function call, that is China. It means that control would transfer to the function China, and the Pakistan function remain incomplete. Control would transfer to China, and the statement I am in China would be executed, and when this function would get complete, control would transfer back to the function where this function has been called. So as China has been called in Pakistan, so control would come back to the Pakistan and not to the main. So we will come back to the Pakistan where this China has been called, and the next statement I am back in Pakistan would be executed. And when this Pakistan would get complete, then control would transfer to the function where Pakistan has been called. As Pakistan has been called in main, so control would transfer into the main, and the next statement I am finally back in main would be executed, and after that we would have the end of main. So please try to understand the sequence or the functioning or the calling of functions. First of all, I am in main, then a Pakistan call, control is transferred to the function Pakistan. I am in Pakistan, then the China is called in Pakistan. Pakistan is calling China, where Pakistan was called in main. So main called Pakistan, Pakistan called China. So control is then transferred to China. After execution, control would come back to the function where China has been called. So China has been called in Pakistan. So Pakistan is the calling function of China. So control would come back to the Pakistan function. The next statement, I am back in Pakistan. When this gets complete, then control transfer to the function where Pakistan has been called. So Pakistan was called in main, so control would come back to main, and the next statement I am finally back in main would be executed. इसमें सीक्वेंस को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, और फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वापस वहीं पे आता है जहाँ पे उसे कॉल किया गया होता है. तो इसकी वर्किंग के लिए मैंने ये एग्जांपल सेट की है कि सबसे पहले पाकिस्तान कॉल हुआ तो कंट्रोल पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान ने चाइना को कॉल किया तो कंट्रोल चाइना में चला गया, और वहाँ एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल वापस पाकिस्तान में आएगा, मेन में नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना को कॉल किया गया पाकिस्तान में, तो कंट्रोल वापस वहीं पे आता है जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया होता है. तो फंक्शन को कॉल किया गया चाइना में, तो कंट्रोल वापस चाइना में आएगा, और यहाँ पे आने के बाद इसकी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये फंक्शन पाकिस्तान कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कंट्रोल वापस जाएगा जहाँ पे पाकिस्तान को कॉल किया था. तो पाकिस्तान को कॉल किया हुआ था मेन में, तो कंट्रोल वापस मेन में जाएगा और फिर वहाँ पे जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेगा. सो जब एक फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जंप करके उस फंक्शन में चला जाता है, और फिर जब वो फंक्शन कंप्लीट होता है तो वापस वहीं पे आता है जहाँ पे उसे कॉल किया गया होता है. तो ये इसकी वर्किंग थी. इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा. सबसे पहले आई एम इन मेन, देन पाकिस्तान, आई एम इन पाकिस्तान, then China, I am in China, then control come back to Pakistan again, I am back in Pakistan, then again control come back to main, and I am finally back in main. So this would be the result. First of all, I am in main, I am in Pakistan, I am in China, I am back in Pakistan, and I am finally back in main.
तो इससे काफ़ी आपको जो है वो इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जो लोग जावा में काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव मेथड्स rather than functions. So as already stated, methods and function both are the same thing, while in C++ we use the term functions and in Java we use the term method. The concept behind method and function is almost same, but there is some syntax difference. Let's discuss. इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है जावा में कि जावा में फंक्शंस को डिक्लेयर करने की या प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप जो है वो डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड होता है, इसलिए इसको सेपरेट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें भी मैंने सेम फंक्शंस या मेथड जो है वो अप्लाई किए हैं, जो हमने C++ में कॉन्सेप्ट लिया था उसी तरीके से। ये हमारा मेन है और मेन में सबसे पहली स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम इन मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन मेन वुड बी डिस्प्लेड, देन पाकिस्तान कॉल, control would be transferred to the Pakistan function, I am in Pakistan would be displayed, then China called, so this method would be called China would be called in Pakistan. So over here the calling function is Pakistan and the called function is China. Control is transferred to the China and I am in China. After the completion of this function, this method China, control come back to the calling method, and that is Pakistan. And the next statement in Pakistan would be executed, that is system.out.println I am back in Pakistan. And when this Pakistan gets complete, control is transferred to the main again, and the next statement I am finally back in main. So the working of function and method is same. First Pakistan method would be called, control would be transferred to the Pakistan, and in Pakistan I am in Pakistan would be displayed, then China method would be called, control would be transferred to the China method where I am in China would be displayed, and after completion of this function, this method China, control would come back to the Pakistan and not to the main, where the next statement I am back in Pakistan would be executed, and when this method gets complete, Pakistan control would be transferred to the main method where system.out.println I am finally back in main would be displayed. वर्किंग मैकेनिज्म सेम है। सबसे पहले हम मेन में एंटर होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम इन मेन वुड बी डिस्प्लेड, आउटपुट ये सामने है, फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम इन मेन, देन पाकिस्तान इज कॉल्ड, control would transfer to the Pakistan method where I am in Pakistan would be displayed, the second output would be I am in Pakistan, then the next statement China is called, control is transferred to the China method where I am in China would be displayed. Yes, you can see the output. When this method China gets complete, control is transferred back to the main, to the Pakistan where China was called. So the next statement I am back in Pakistan, it would be displayed. When this Pakistan gets complete, control again transferred back to the main where I am finally back in main would be displayed. वर्किंग सेम है जी। सबसे पहले मेन वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर पाकिस्तान का मेथड कॉल होगा, कंट्रोल पाकिस्तान में एंटर होगा, वहाँ पे आई एम इन पाकिस्तान, देन चाइना का मेथड कॉल होगा, कंट्रोल चाइना के मेथड में एंटर हो जाएगा, वहाँ पे आई एम इन चाइना। जब ये चाइना मेथड कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल वापस वहीं पे आएगा जहाँ पे इसको कॉल किया गया था चाइना को। तो चाइना को कॉल किया गया पाकिस्तान में, तो कंट्रोल पाकिस्तान में वापस आएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा आई एम बैक इन पाकिस्तान। और जब ये पाकिस्तान का मेथड कंप्लीट हो जाएगा फिर कंट्रोल वापस वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पाकिस्तान को कॉल किया गया था। तो पाकिस्तान को कॉल किया था मेन ने, तो यहाँ पे वापस आएगा और फिर आई एम फाइनली बैक इन मेन डिस्प्ले होगा।
تو پاکستان کو کال کیا گیا ہے مین کی طرف سے، مین کالنگ ہے پاکستان کا، جبکہ پاکستان میں جب ہم جائیں تو چائنا کال ہوا ہے، تو چائنا از کالڈ بائی پاکستان. So Pakistan is the calling function of China, and Pakistan is called by main. So main is the calling function of Pakistan. Main is the calling function of Pakistan, and Pakistan is the calling function of China. سو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب میتھڈ جس جگہ پہ کال کیا گیا ہوتا ہے یا جو میتھڈ اسے کال کرتا ہے، آفٹر ایگزیکیوشن اور دا کمپلیشن آف دا میتھڈ کنٹرول واپس وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ اسے کال کیا گیا ہوتا ہے. تو اگر پاکستان نے چائنا کو کال کیا ہے تو کنٹرول واپس چائنا ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد واپس پاکستان میں آئے گا، مین میں نہیں جائے گا. اور پاکستان کو کال کیا تھا مین نے، سو پاکستان اپنی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مین میں واپس جائے گا. تو دس از دا آؤٹ پٹ. آپ اس کو خود بھی رن کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہیئر از اندر ایگزامپل. We have three methods over here: Pakistan, China and England. First of all, the execution would start from main method. I am in main. Then Pakistan is called. Control is transferred to the Pakistan. I am in Pakistan. Then China is called. Control is again transferred to the China. I am in China. Where England is called, control will transfer to the England. Over here, just try to understand the sequence of execution. Main would call Pakistan, Pakistan would call China, China would call England, and after completion, it is reversed in the same sequence. So, first I am in main, then Pakistan, I am in Pakistan, then China, I am in China, then England, I am in England. When England gets complete, control would transfer to the China because England was called in China. So over here control would come, and the next statement I am back in China. So when China gets complete, control would transfer back to the Pakistan because China was called in Pakistan. Over here control would come, and the next statement I am back in Pakistan, and when this Pakistan method gets complete, control would transfer to the main where I am finally back in main. So اس چیز کو سمجھیں کہ سب سے پہلے مین میں انٹر ہوں گے، I am in main, correspondence output, then پاکستان، کنٹرول پاکستان میں انٹر ہوگا اور I am in پاکستان ڈسپلے کریں گے، اور یہیں پہ باقی اسٹیٹمنٹس کے بعد جب چائنا کال ہوگا تو کنٹرول جمپ کر کے چائنا میں انٹر ہو جائے گا اور وہاں پہ I am in چائنا ڈسپلے ہوگا. اور پھر انگلینڈ کا فنکشن کال ہوا ہے، کنٹرول انگلینڈ میں چلا جائے گا، وہاں پہ I am in انگلینڈ. تو یہاں تک آپ پہنچ گئے. جب انگلینڈ کمپلیٹ ہوگا تو کنٹرول واپس چائنا میں آئے گا اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ I am back in چائنا، یہ لائن آپ کی ڈسپلے ہوگی. اور پھر چائنا کمپلیٹ ہوگا تو کنٹرول واپس پاکستان میں آئے گا اور یہاں پہ جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے I am back in پاکستان وہ ڈسپلے ہوگی. اور جب پاکستان کمپلیٹ ہوگا تو کنٹرول واپس مین میں آئے گا اور جہاں پہ I am finally back in main. تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی فنکشن کسی دوسرے فنکشن کو کال کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں گے کنٹرول واپس اسی فنکشن میں آتا ہے جس فنکشن میں اسے کال کیا گیا ہوتا ہے یا جہاں پہ اسے کال کیا گیا ہوتا ہے. تو ہوپفلی یہ پروسیس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں ہم ویلیوز پہ کام کریں گے، کس طرح سے ڈیٹا پروسیس کیا جا سکتا ہے فنکشنز میں، کیلکولیشنز میں. تو ورکنگ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. تو یہاں تک انشاءاللہ آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو نیکسٹ بھی آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.